Now we are going to talk about what are the characteristics of organism. Means एक organism का characteristics. So that we are going to discuss in this chapter. We went on journey through different habitats and discussed many plants and animals. हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे जगह के बारे में, बहुत सारे different types of habitats, वहाँ के adaptation methods, so all these things we have looked here. And in activity 1 हम लोग forest में रहने वाले, माउंटेन रीजन में रहने वाले, लैंड ग्रासलैंड में रहने वाले, सी में रहने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स वी हैव लुक्ड इन दिस चैप्टर अप टू नाउ. लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम फॉरेस्ट में क्या क्या देखते हैं? What are all the things that you can see in forest? Of course, there is trees are there, creepers are there, small and big animals are there, birds are there, snakes are there, insects are there, rocks are there, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms, and maybe only some of the objects that are present in the forest. We have listed a lots of things that we can see in the forest. So now we are going to categorize which of them are living things and which of them are non-living things. So looking this, you can easily say that, okay, this is a living thing and this is a non-living thing. On what basis we are going to distinguish between a living things and non-living things, that we are going to learn now. How do we know that something is living? Often it is not so easy to decide. We are told that plants are living, but they do not move like a dog or a pigeon. On the other hand, a car or a bus can move, but still we consider them as a non-living thing. हम लोग बोलते हैं जो मूविंग होता है तो लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ऐसे तो प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं. सो हाउ कैन वी से दैट इट इज़ अ लिविंग थिंग? अगर मूव करते हैं तो कार और बस भी तो मूव करते हैं, बट वी से दैट इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. Also, plants and animals appear to grow in size with time. Time के according plants और animals तो grow करते हैं. तो ऐसे है तो at times clouds in the sky also seem to grow in size. आसमान पे जो clouds दिखते हैं वो भी तो बड़े होते हैं. तो ऐसे है तो हम कभी भी नहीं बोलते हैं ना कि cloud is a living thing. वो भी तो बड़े हो रहे हैं. So now we are going to tell how does one distinguish between living and non-living thing. तो ऐसे है तो किस चीज़ के अकॉर्डिंग we are going to distinguish between the living thing and a non-living thing. क्या क्या characteristics है एक living organism का if we compare with a non-living organism. So the first one is, do all organisms need food? So in the first chapter itself, हमने पढ़ा था why we need food, that we learned in the first chapter. So in chapter 1 and 2, we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. So we have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. तो हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ा था प्लांट्स भी अपना खाना कैसे बनाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. And to survive in the earth, all the living organisms like the animals and human being also, they need food. So animals depends on plants or other animals for their food, that we discussed in chapter 1 and 2. So why we need food actually? Food gives organisms the energy needed for them to grow. So why all organisms need food? Food gives organisms the energy needed for them to grow. And also organisms need energy for other life processes that go on inside them. जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स को फंक्शन करने के लिए, हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए, लंग्स का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, हर चीज़ के लिए फूड ज़रूरी है. क्या एक नॉन लिविंग थिंग को फूड का ज़रूरत है? नो. अगर हमारे घर पे एक अलमारा है, क्या उसको फूड का ज़रूरत है? No. So here we can easily distinguish between a living thing and a non-living thing. So let's see the another point. That is,
डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं? सो लेट्स सी नाउ. Does the kurta you had 4 years back still fit you? जो कुर्ता जो आप लोग पहनते हैं 4 साल पहले का कुर्ता, क्या अभी आप लोगों को फिट आता है? नहीं आता है, बिकॉज यू नो दैट यू आर ग्रोइंग. So you may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. आप लोगों को realize नहीं होता है, लेकिन आप लोग every time you are growing, और बहुत साल और थोड़े सालों के बाद आप लोग अडल्ट भी हो जाएंगे. सो young one of animals also grow into adult. ये सिर्फ इंसान के बारे में नहीं है, जानवरों के बारे में भी ऐसे ही होता है. द young one of animal also grow in adults. You have noticed that pups grows into adults. A chick hatched from an egg and grows into a hen or a cock. है ना, पप्स जो होता है, जो पपी होता है वो डॉग बन जाता है, और जो अंडे में से चिक्स अंडा फोड़ के बाहर आता है, और उसके बाद वो बड़े होके हैन और कॉक भी बन जाता है. सो ऐसे है. तो प्लांट्स कैसे होते हैं तो वो भी आप लोगों ने देखे होंगे. अगर आप लोग अपने आसपास में प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, सो डे बाय डे द प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग. So some are very small and young, and some are very bigger. So ये भी आप लोगों ने देखा है, plants also grow. So not only the animals or the human being, the plants also grow. क्या आप लोगों के घर के अलमारा बड़े होते हैं, grow होता है? No. So we can say that the organism, the living organisms shows growth. So this is the second method how we can distinguish a living thing and a non-living thing. And the third point is, do all organisms respire? क्या all the organism breathing करते हैं? What does mean by respiration? Respiration means the breathing is a part of a process called a respiration. We know that if we want to survive in this world, अगर हमें रहना है, definitely we need to take in oxygen. Yes. So what we do, we inhale. When we inhale, the air moves from outside to inside of our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो 2 प्रोसेस होते हैं, एक इनहेल होता है और एक्सहेल होता है. इनहेल मीन्स हम लोग एटमोस्फियर से एयर को अंदर लेते हैं, दैट मीन्स द ऑक्सीजन. एंड हम लोग बाहर एयर भी छोड़ते हैं, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो इस ब्रीथिंग प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता है. सो इन रेस्पिरेशन, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर वी ब्रीथ इन एंड इज यूज टू बाय आवर बॉडी. तो हमें ऑक्सीजन क्यों लेना होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, सो वी नीड ऑक्सीजन. एंड when we breathe out, carbon dioxide produced in this process. जब हम लोग breathe out करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dog और cats is similar to humans. तो हमें पता है जैसे ह्यूमन बीइंग का ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, द सेम वे एनिमल्स का भी ब्रीथिंग प्रोसेस होता है. एंड ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट. आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे जब भी ये जानवर जब लेटे रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, तो आप लोग देखते होते उनके जो एब्डोमेन जो होता है, जो पेट जो होता है, ऐसे आगे पीछे आते हैं ना. सो दैट मीन्स दे आर ब्रीथिंग वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट. हमारा भी ऐसे होते हैं, हम ऐसे लेटते रहते हैं तो हम देखते हैं अपने एब्डोमेन ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होता है. सो इट शोज दैट दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग. Respiration is necessary for all living organisms, but some animals may have different mechanism for exchange of gases, which is the part of their respiration process. तो some animal का respiration process different होता है. हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था, the earthworm breathe through their skin. earthworm अपने skin से breathing करते हैं. And fish, that also we have learned, the fish have gills for using oxygen dissolved in water. तो fish का तो respiration mechanism is different. They are using gills, and this gills absorb oxygen from the air dissolved in water. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. तो हम लोगों ने अभी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और फिश के बारे में बोला. सो डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पियर?
क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेट करते हैं? वो तो हमें पता है. दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स. And the leaves take in air through tiny pores in them. And we learned that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. Sunlight के presence में, with the help of the sunlight, the plants use carbon dioxide to produce their food and it gives out oxygen. And the amount of oxygen released in this process of food preparation by plants is much more than oxygen they use in respiration. So उन लोग क्या करते हैं? उन लोग जब respiration process में उन लोग जो oxygen use करते हैं उससे ज़्यादा इन लोग क्या करते हैं? They produce or they give out oxygen during the photosynthesis. Okay, and the respiration in plants takes place day and night. वो तो हमने already पढ़ चुका है. So this is the third method, respiration, which helps to distinguish between a non-living thing and a living thing. हमें पता है अपने घर के अलमारी रेस्पिरेट नहीं करते हैं. They are not taking any breathing. ओके, सो 3 चीज़ें अभी हमने पढ़ा. अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. तो स्टिमुलाई आप लोग पहले बार सुन रहे होंगे ये वर्ड, बट दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, बट द थिंग यू हैव ऑलरेडी नो. बस वर्ड ही न्यू जैसे हैं, लेकिन बात तो आप लोगों को पता है. स्टिमुलाई मीन्स हाउ डू यू रेस्पॉन्ड. आप लोग कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कि if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot, अगर आप ऐसे बिना चप्पल के अगर आप लोग वॉक कर रहे हैं तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर पैर रखेगा तो क्या करेंगे आप लोग? जल्दी पैर उठाएंगे, वही स्पीड पे आप लोग पैर पीछे की ओर खींचेंगे, है ना. दैट इज़ द रिस्पॉन्ड. आप लोग का रिस्पॉन्स ऐसे होता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. अगर आपके फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम या केक के बारे में आप लोग सोचते होंगे तो कैसे होता है? जल्दी आपके मुंह में पानी भर जाता है, इजंट इट? सो दैट इज़ ऑल्सो द वे ऑफ रेस्पॉन्ड. And you suddenly move from a dark place into a bright sunlight. अगर बहुत अंधेरे में आप लोग बैठे हैं और जल्दी आप लोग सनलाइट में गया, ब्राइट प्लेस में गया, तो क्या होता है? आप लोग की आंखें ब्लिंक करेंगे, isn't it? Your eyes will shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright. वो जो changed bright हुआ है ना, उससे थोड़ा adjust होने के लिए आप लोगों की आंखें ब्लिंक करेंगे. So we can say that the changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. So what is meant by stimuli? जो changes, जो हमारे surroundings में जो भी changes, हमारे आसपास जो भी changes होता है, उस changes को हम कैसे respond करते हैं, उसे हम लोग stimuli बोलते हैं. Do other animals also respond to stimuli? Yes. When food is served to them, do you find them suddenly becoming active or seeing the food? तो आप लोग देखते हैं जब खाना कोई जानवर के सामने हम लोग लेकर जाएगा तो उन लोग जल्दी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, खाना खाने के लिए जल्दी आ जाते हैं, है ना. सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग. एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, हाउ डज इट रिस्पॉन्ड. अगर कोई भी बर्ड ही कुछ बैठे अगर हम लोग उसके पास जाएंगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं? वो भाग जाते हैं, है ना. ऑल्सो द वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड टुवर्ड्स देम. सो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट्स दैट they are also respond. That means the living organism responds to their changes happened in the surroundings. Do plants also respond to stimuli? Yes, you know that flowers of some plants bloom only at night. हम देखते हैं कुछ जैस्मिन जैसे कुछ सफ़ेद रंग का जो भी फ्लावर्स होता है वो लोग रात को उगते हैं ना, एंड फ्लावरिंग करते हैं और सुबह वो बंद हो जाता है. हम लोग ऐसे देखा है. एंड वन ऑफ द प्लांट यू नो दैट टच मी नॉट होता है, जो उसका लीफ फोल्ड होता है और हम क्लोज होते हैं. जब भी हम उसको टच करेंगे तो वो जल्दी वो क्लोज होता है. सो दिस ऑल्सो शोज दैट इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. So we can conclude that plants also responds to their surroundings. Okay, क्या आपके घर के अलमारा अगर बाहर बारिश में रख लिया कि वो
कुछ भाग के जाएगा? वो कुछ आके सामने आएगा तो आग आ गया करके अलमारी भाग के जाएगा? नो. This is the fifth observation that distinguish whether an organism is a living thing or a non-living thing. So there is an activity for the response to stimuli, that is यहाँ पे बोला गया है we have to take a plant, okay, and keep it nearer to the window and place a little bit away from the window, okay, and you have to open the window and you can see that after a few days the plant is bended towards the window side, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे सन निकलता है उसकी ओर, क्योंकि for the growth and development of the plant of course they need sunlight, तो sunlight कहाँ से आता है? तो उसकी तरह से उन लोग का bend होता है. We can say that it is not going upright, it is bending towards the sunlight, so it is also responding to some stimulus. So this is one of the activity that depicts the response of plants to stimuli. And the another point which distinguish between and the living thing and the non-living thing is that living organisms and excretion. So here it is saying all organisms need food, that we know. Not all the food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. वो तो हमें पता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो completely utilize नहीं होता है. Only a little part of the food get utilized by our body और बाकी तो waste हो जाता है. तो हमें पता है what happened to the rest of the food? So this has to be removed from the body as waste. Waste की तरह हमारे body से remove होता है. So we can say that the process of getting rid of waste by organism is known as excretion. So what is meant by excretion? That is the process of getting rid of waste by organism. Getting rid of waste means waste से waste को निकालने के लिए जो process होते हैं, हमारे body का जो process होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Excretion बोलते हैं. So do plants also excrete? क्या plants भी excrete करते हैं? क्या प्लांट्स भी अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं? दे डू, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स. जैसे एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग करते हैं वैसे नहीं होता है. द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. मतलब उन लोग अपने वेस्ट को अपने कोई भी एक पार्ट ऑफ द प्लांट पे रखते हैं दैट डज नॉट हार्म द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. And some plants remove the waste products as secretion. So this is how the plants remove their waste. So we can say that excretion is another characteristic common to all organisms. तो ये हमारा sixth characteristics है that distinguish between a living organism and a non-living thing. And the next characteristics of a living organism is, do all organisms reproduce their own kind? So what is meant by reproduction? So you know that, have you ever seen nest of some birds like pigeon? आप लोगों ने इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक नेस्ट यू कैन सी दैट, एंड यहाँ पे अंडे हैं, एंड आफ्टर दैट द एग गेट हैश्ड एंड दिस birdie will come out, isn't it? ये तो आप लोग को पता है. So this is called the reproduction. मतलब अपना ही एक बेबी बर्डी को reproduce करना. So this is the another characteristics of a living organism. Not only the birds, the animals also reproduce their own kind. जो डॉग पपी को बर्थ देते हैं और पपी जब बड़े हो जाता है तो फिर वो डॉग बन जाता है, वैसे किटन होता है, सो वैसे चिकन्स होता है. सो दीज आर ऑल्सो नॉन एज द रिप्रोडक्शन. सो एनिमल reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. मतलब the mode of reproduction, जो reproduction का जो process होता है, कुछ egg देते हैं तो कुछ अपने खुद का young baby को देते हैं.
So animal के according the mode of reproduction is also different. So next is the mode of reproduction in plants. So plants also reproduce like animals. Plants also differ in their mode of reproduction. वो तो हमें पता है, वो तो हम पिछले चैप्टर में हमने ये भी देखा था. कुछ प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अगर हम स्टेम को रखेंगे तो फिर रिप्रोडक्शन वहाँ से दूसरा प्लांट उग के आ जाता है. अगर सीड है तो उससे होता है. सो वहाँ पे भी the mode of reproduction is different. So many plants reproduce through seeds. वो तो हमने वो में पता है, हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, वो स्प्राउटिंग एक्सपेरिमेंट, जर्मिनेशन में हमने देखा था. Many plants reproduce through seeds which can germinate and grow into new plants. In this figure you can see that a seed from a plant germinates into a new plant. ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं. And some plants also reproduce through parts other than seed. कुछ plants ऐसे reproduce करते हैं which is not using the seed, the other part of the plant. For example, a part of a potato with a bud grow into a new plant. जो पोटैटो जो होता है, इट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अ बड. यू नो दैट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट. बड, सीड, स्टेम, these are all the part of the plant. So the potato grow out from a bud of that potato plant. Okay, so this is the another mode of reproduction process in plants. So here activity number 5 is telling that take a cutting from a rose or a mehendi plant. Fix it in a soil and water it regularly. What do you observe after a few days? इन लोगों को बोला है रोज़ प्लांट का या मेहंदी का प्लांट का जो भी हो, उसका जो एक थोड़ा सा ब्रांच कट करो और उसको सॉइल में फिक्स करो एंड देन पॉर अ वाटर रेगुलरली. और आफ्टर ए फ्यू डेज व्हाट यू हैव सीन दैट इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ कटिंग. वो तो हमें पता है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. सो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो. Talk to a gardener if possible on the care to be given to cuttings to make them grow in plants. तो गार्डनर से उन लोग थोड़ा बोल रहे हैं कि अगर आपने जो कट करके रखा है, अगर उसमें से एक दूसरा प्लांट निकालना थोड़ा मुश्किल है, अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. आप कोई भी गार्डनर से पूछेंगे तो उन लोग आपको बता कर देंगे उसको कैसे कट करना है. उसको ऐसे बोला जाता है कि वी हैव टू कट इन ए स्लैंड टाइप. वो जो उसका एंड है ना, स्लैंड जैसे थोड़ा स्लोपी वे में कट करना है, क्योंकि वो जो पानी उसमें से जाने का चांसेस है. सो ऐसे मैंने सुना है एंड आई हैव ट्राइड ऑल्सो, सो इट विल वर्क डेफिनेटली. So we can say that living things produce more of their own kind through reproduction. So whether your अलमारा reproduce? No. अगर आपके घर का अलमारा दूसरा अलमारा होगा, नहीं होगा, isn't it? So this is the one of the characteristics that distinguish between the living thing and the non-living thing. And the 7th characteristics of living organism is, do all organism move? In chapter 8 about the body movements, we learned the various way in which animals move. Gait of motions हमने वो देखा था. Human body का movements के बारे में हम लोग पढ़े थे. So they move from one place to another and also show other body movement. The living organisms like the animals भी हो, human beings हो, they move from one place to another, and we said that it is as a locomotion and also it shows the other body movement also. उनके body movements भी खुद भी move होते हैं. तो ऐसे है तो we know that plant is also a living organism. क्या plant भी move करते हैं? What about plants? Do they also move? No, we know that plants are generally anchored in the soil, so they do not move from one place to another. क्योंकि रूट एंगर करके रखा है ना, रूट सॉइल प्लांट को सॉइल में एंगर करके रखा है, तो इसीलिए द प्लांट इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हाउएवर, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. लेकिन जो रूट जो वाटर और मिनरल्स लेते हैं वो तो
स्टेम थ्रू वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स का तो मूवमेंट हो रहा है, एंड ऑल्सो जो फोटोसिंथेसिस थ्रू जो फूड प्रिपेयर करते हैं, हाँ, वो फूड लीफ में प्रिपरेशन होने के बाद अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी तो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट इनसाइड द मूवमेंट इज ऑल्सो हैपनिंग. अदर देन दिस, हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? इसके अलावा और कोई मूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं? येस, द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, जो फूल जो खिलते हैं, जो बंद हो जाते हैं. सो दीज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट दैट हैपन इन प्लांट्स. There is such a variety of living organisms, we know that, but all of them show common characteristics as we have discussed. हाँ, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं. Yet another common characteristic is that लिविंग बीन्स डाई. वो भी हमें पता है लिविंग बीन्स का, इतना तो हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देखा. एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द लिविंग बीन्स डाई, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं. बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड. तो एक टाइप का अगर हम बोल रहे डॉग के बारे में या कैट के बारे में, नहीं तो हम ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो अगर हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगर हम एग्जिस्ट करना है, सर्वाइव करना है, सो वी शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस ऑफ आवर ऑन काइंड, इजंट इट? सो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को देयर ऑन काइंड का रिप्रोडक्शन करना चाहिए. देन ओनली दैट लिविंग बीइंग विल सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन दिस अर्थ. सो वी हैव सीन दैट all living things seem to have some common characteristics. So what are all the characters that we have discussed here? They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow, and die. So these are all the some common characteristics that we have discussed in this chapter for distinguish between a living thing and a non-living thing. So do we find some non-living things that also show some of these characteristics? क्या हम लोग भी कुछ ऐसे कोई non-livings को देखा जो ये सब characteristic करते हैं? To understand this a little better, let us look to a specific example. So consider any seed, say मूंग. इज इट लिविंग? हमने बोला तो जो मूंग जो होता है वो सीड, वो जो जर्मिनेट होता है तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्लांट. सो इज इट लिविंग? सो यू आर सेइंग दैट वेदर इट इज़ अ लिविंग थिंग. सो हियर इट इज़ आस्किंग दैट if that seed stay in a shop for a month and not show any growth or some of the other characteristics of the life, मतलब वो जो दुकान में बहुत दिन से और बहुत महीने से वो सीड दुकान में पड़ा है, तो वो कोई ग्रोथ का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं देख रहा है जो हमने अभी तक डिस्कस किया था. However, we bring the same seed and plant it in soil, water it, and it turn into a wall part plant. दैट मीन्स वही सीड को हम घर लेकर आके फिर उसको हम सॉइल में डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर वो जाके एक प्लांट बन जाता है. सो डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर ए मैनी मंथ्स? अगर ये जो यही सीड शॉप में इतने महीनों से पड़ा है, क्या उसको फूड का ज़रूरत था? क्या वो एक्सक्रीट करते थे? क्या वो ग्रो करता है? क्या वो रिप्रोड्यूस करता है? कुछ नहीं करता है. सो वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैनॉट ईजिली सी दैट a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be a living. तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि जो भी हमने अभी तक जितना भी लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड किया है, डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग वी कांट से दैट इट इज़ टू बी लिविंग. तो ऐसे है तो द अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ क्या है? Push your hand deep inside a sack of wheat. Did you find it is warm inside? अगर एक सैक, एक
थैली में वीट है, अगर हम उसके अंदर हाथ डालेंगे, एकदम अंदर की ओर हाथ डालेंगे, क्या हमें वार्म फील होता है? देर इज सम हीट बींग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ वीट. वीट के अंदर हाथ रखे थोड़ा गर्म फील होता है हमारे हाथ को, वार्मनेस फील होता है. द सीड्स रिस्पेयर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट. उसका मतलब सीड क्या करते हैं, थोड़ा रिस्पेयर करता है. सो दैट्स वाई इट इज हीटिंग अप. So we say that respiration is the process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very active. अगर जो दूसरा जो लाइफ प्रोसेस, दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बोला है वो तो उतना एक्टिव नहीं है, बट सीड तो रेस्पेयर करते हैं. द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट इज वर्किंग हियर. सो इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर वन क्वेश्चन, वॉट देन इज लाइफ. तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, इतना भी ईजी नहीं है टू एक्सप्लेन वॉट इज लाइफ. हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस, जितना भी डिफरेंसेस एक एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ग्रोथ का, हर चीज़ का, उसके हिसाब से अगर हम बोले जाएंगे तो हम लोग एक चीज़ तो बोल सकते हैं, वी कैन गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ. अगर ऐसे सवाल का एक क्वेश्चन तो हम बोल सकते हैं दैट लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. लाइफ तो बहुत सुंदर है ना. सो दिस इज़ द वन ऑफ द आंसर एटलीस्ट वी कैन गिव if someone is asking what is a life. So thank you children. So this is the end of this chapter. Hope you all enjoy this chapter and you have understood all the concepts. And please, if you have any doubt, please give me reply in the comment section so that I will give you a more clarification on this chapter. Thank you children.